हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली नोट्स। आज का टॉपिक है अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो बहुत सारे चेंजेस आए, वर्किंग मेथड्स में, मैन पावर मैनेजमेंट में, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए। सो देयर वर चेंजेस इन टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो। और इन सब चेंजेस की वजह से इंडस्ट्रियल रिलेशंस में भी एक बदलाव आया। अलग अलग स्कॉलर्स जो डिफरेंट फील्ड्स को बिलोंग करते हैं, उन्होंने अलग अलग नज़रिए से इंडस्ट्रियल रिलेशंस के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। एक इकोनॉमिस्ट ने इंडस्ट्रियल रिलेशंस के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया इन टर्म्स ऑफ मार्केट फोर्सेस और लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एक पॉलिटिशियन के नज़रिए से इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस ड्यू टू क्लास वॉर। From the viewpoint of a psychologist, industrial relations can be studied in terms of work behavior and attitude of labor and management. So ऐसे ही कुछ व्यू पॉइंट्स हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, जिनको हम कहते हैं अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ऐसे ही कुछ कॉमन अप्रोचेस हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। सो द मोस्ट कॉमन अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर साइकोलॉजिकल अप्रोच, सोशियोलॉजिकल अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, Socio-Ethical Approach, Giri Approach, Gandhian Approach and System Approach. So अब हम इन अप्रोचेस को वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजिकल अप्रोच की। The psychologists are of the view that the problem of industrial relations are deeply rooted in the perception and the attitude of focal participants. तो साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंगली जो प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, मतलब जो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो फोकल पार्टिसिपेंट्स हैं, और यहाँ फोकल पार्टिसिपेंट्स हैं एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए होते हैं क्योंकि दोनों के एटीट्यूड में, परसेप्शन में डिफरेंस होता है। दोनों का एटीट्यूड, थिंकिंग, नज़रिया अलग होता है। The influence of individual's perception on his behavior has been studied by Mason Harie. मैसन हैरी एक साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने इस चीज़ को स्टडी किया कि कैसे एक इंडिविजुअल की परसेप्शन उसके बिहेवियर को अफेक्ट करती है, और उन्होंने दोनों पार्टीज, यूनियन लीडर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स, दोनों के बिहेवियर को स्टडी किया थ्रू थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। तो ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है जहाँ पार्टिसिपेंट्स को कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्ड्स। देन दे आर आस्क्ड टू टेल द एग्जामिनर story about each card or picture, which is their perception, their interpretation of the person or event or situation shown in the picture. इससे जो participants हैं उनकी thinking, उनके attitude, उनकी personality के बारे में पता चलता है। For example, a half-filled glass will be seen in different ways by different people. The optimists will see it as a half-filled glass and the pessimists will see it as a half-empty glass. So optimists are the one who focuses on good, and the pessimists are the one who focuses on the negative. So Mason Harie ने भी thematic apperception test conduct किया on employees as well as on employers. For the test, a photograph of an ordinary middle-aged person served as input, which both the groups were expected to rate. Both the groups came out with entirely different interpretations of the same photograph. The union leaders referred the person in the photograph as manager, whereas the group of executives saw union leader in the photographs. So मैसन हैरी ने जो टेस्ट कंडक्ट किया उसमें उन्होंने एक मिडिल एज्ड पर्सन की पिक्चर दोनों पार्टीज को दिखाई, एंड बोथ द पार्टीज वर एक्सपेक्टेड टू रेट द पिक्चर। दोनों पार्टीज की जो परसेप्शन थी पिक्चर को लेकर वो डिफरेंट थी। यूनियन लीडर्स के अकॉर्डिंगली वो एक मैनेजर की फोटोग्राफ थी और एग्जीक्यूटिव्स के अकॉर्डिंगली वो एक यूनियन लीडर की फोटोग्राफ थी। इससे ये कंक्लूजन निकला कि फर्स्टली द जनरल इंप्रेशन अबाउट अ पर्सन इज रेडिकली डिफरेंट व्हेन ही इज सीन एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पर्सन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबर। मतलब एक मैनेजमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका इंप्रेशन डिफरेंट होगा फ्रॉम अ पर्सन हु इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबर। Secondly, the management and labor see each other as less dependable. मतलब ना तो मैनेजमेंट को लेबर उतनी रिलायबल लगती है और ना लेबर को मैनेजमेंट ज़्यादा ट्रस्टवर्दी। Thirdly, the management and labor see each other as deficient in thinking regarding emotional characteristics and interpersonal relations. मतलब मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि लेबर उनकी फीलिंग्स को नहीं समझती और लेबर को ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट उनके इमोशंस को नहीं समझती। The perception of unions and of the management on the same issues may be widely different and hence
Clashes may arise between the two parties. The reasons of strained industrial relations between the employers and the employees can be understood by studying differences in the perception of issues, situations, and persons between the management groups and labor groups. So same topics पर या इश्यूज पर दोनों पार्टीज की, यूनियन की और मैनेजमेंट की थिंकिंग में, परसेप्शन में बहुत वेरिएशन होता है, जिसकी वजह से उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. The conflict between labor and management occurs because every group negatively views or perceives the behavior of the other. Even जो honest intentions भी होती हैं, they are viewed with suspicion. So अगर interpersonal and intergroup relations में ज़रा सा भी strain होगा तो वो पूरे system की harmony, integrity को affect करेगा. So this is psychological approach. Next is sociological approach. Industry is a part of society and it is a community made up of individuals and groups with different family background, educational level, personalities, emotions, likes and dislikes, etc. These differences in individual attitudes and behavior create problems of conflict and cooperation in industry. So, industry society का एक part है. It is a social world in miniature जिसमें individuals हैं, groups हैं from different family background, educational level, personalities, emotions, likes and dislikes, attitude, behavior, etc. और इन differences की वजह से conflict arise होता है. There are problems of competition and conflicts among the members of an industrial society. The value systems, customs, status symbols and institutions of the society in which industry functions affect relations between the parties involved. Urbanization, housing and transport problems in industrial areas, disintegration of joint family system and other social problems cause stress and strains among workers. The social system and cultural changes shapes behavior patterns and cause adjustments in industrial relations. There cannot be harmony and peace in industry when the society is in turmoil. तो ऐसा नहीं है कि जो प्रॉब्लम्स है इंडस्ट्रियल रिलेशंस की वो सिर्फ वेजेस या एम्प्लॉयमेंट या वर्किंग कंडीशंस या लेबर वेलफेयर जैसे इश्यूज की वजह से ही होती है, बट बहुत सारे सोशोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं लाइक वैल्यू सिस्टम, कस्टम्स, नॉर्म्स, एटीट्यूड्स एंड परसेप्शन ऑफ बोथ लेबर एंड मैनेजमेंट. Further, social consequences of industrialization like migration of rural population to urban areas result in family disintegration. The joint families are breaking up. Then there are housing problems, transportation problems. Sometimes workers gambling में, drinking में, drug abuse etc. में involve हो जाते हैं. All these things lead to stress, frustration, which affect workers' productivity and efficiency, that in turn influence the industrial relation system of an industry. Third approach that we are going to study is human relations approach. The human relations school founded by Alton Muir offers a coherent view of the nature of individual conflict and harmony. Human relations approach is interdisciplinary in nature because knowledge drawn from several disciplines like psychology, sociology, anthropology, economic and political science is used in it. So जो human relations school है that was introduced by Alton Muir, it is a multidisciplinary approach क्योंकि ये अप्रोच अलग अलग फील्ड से आइडियाज़, व्यूज़ या नॉलेज लेती है लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस. एंथ्रोपोलॉजी इज़ scientific study of humanity concerned with human behavior, human biology, cultures and societies in both present and past. Human resources are made up of living human beings. They want freedom of speech, of thought, of expression, of movement, etc. When employers treat them as inanimate objects, encroach on their expectations, throat cuts, conflicts and tensions arise. Workers want security of service, good pay and working conditions, recognition, opportunity to participate in decision making. Employers must understand the needs, attitudes and aspirations of workers. So, industry consists of living human beings who want freedom of speech, freedom of thought, freedom of expression and they do not want to be controlled by others. तो जब employers employees को या workers को object की तरह treat करते हैं, एक machine की तरह treat करते हैं, उनकी expectations, desires, interests को दबाने की कोशिश करते हैं, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं.
वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी चाहिए, दे वांट डिसेंट पे एंड गुड वर्किंग कंडीशंस, दे वांट रिकॉग्निशन, दे वांट पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। एम्प्लॉयर्स को चाहिए कि वो एम्प्लॉयज़ की, वर्कर्स की नीड्स को, एटीट्यूड्स को, डिज़ायर्स को, इमोशंस को, पर्सनैलिटी को समझें। They should not be treated as machines rather than a living and sensitive entity having their own views. So this approach explains the behavior of individuals and groups at work and helps in modifying or utilizing such behavior towards the achievement of organizational objectives. If management and labor both understand and apply human relations approach to their mutual relations, industrial conflicts can be minimized. So management and labor दोनों को human relation approach माइंड में रखते हुए mutual relationship, harmonious relationship develop करना चाहिए, तभी industrial conflicts कम होंगे. So this is human relations approach. Next approach that we are going to study is socio-ethical approach. This approach holds that industrial relations, besides having a sociological base, does have some ethical ramifications. Ramification means consequence or result or effect. Good industrial relations can be only maintained when both the labor and management realize their moral responsibility in contribution to the said task through mutual cooperation and greatest understanding of each other's problems. It is not very widely accepted approach. Socio-ethical approach के accordingly industrial relations का जो concept है, it has both social as well as ethical base. गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस तभी मेंटेन हो सकते हैं जब दोनों पार्टीज, लेबर एंड द मैनेजमेंट, ये समझ लें कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन मेंटेन करना वो उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नेक्स्ट इज गिरी अप्रोच. According to Sri V.V. Giri, collective bargaining and mutual negotiations between management and labor should be used to settle industrial disputes. He suggested that there should be bipartite machinery in every industry and every unit of the industry to settle differences from time to time with active encouragement of government. Outside interference should not encroach upon industrial peace. Giri's stress was on voluntary efforts of the management and the trade unions to wind up their differences through voluntary arbitration. So, according to Sri V.V. Giri, late President of India, मैनेजमेंट एंड लेबर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं, उन्हें कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड म्यूचुअल नेगोशिएशन से सॉल्व करना चाहिए. कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएटिंग द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स. और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आता है जैसे कि एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस, वर्क प्लेस रूल्स, ओवर टाइम पे, वर्क आवर्स, हेल्थ केयर बेनिफिट्स एट्सेट्रा. गिरी के अकॉर्डिंगली एक बाइपार्टाइट मशीनरी होनी चाहिए. बाइपार्टाइट मशीनरी इन्वॉल्व्स एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़. फॉर एग्जांपल वर्कर्स कमिटी. सो एक बाइपार्टाइट मशीनरी होनी चाहिए इंडस्ट्री में, हर एक यूनिट में, ताकि जो डिफरेंसेस आते हैं मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में उन्हें टाइम टू टाइम रिजॉल्व किया जाए और किसी भी तरह की आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. सो इन शॉर्ट, this approach to labor problems encourages mutual settlement of disputes, collective bargaining and voluntary arbitration and not compulsory adjudication. Now to know about collective bargaining and voluntary arbitration and compulsory adjudication, you need to watch our videos on machinery for handling industrial disputes where I have explained all these terms in detail. I've also shared the link of the video in the description box. Next approach that we're going to study is Gandhian Approach. Gandhiji's views on industrial relations are based on his fundamental principles of truth and non-violence and non-possession or aparigraha. Out of these principles evolved the concept of non-cooperation and trusteeship on which his philosophy of industrial relations rests. Gandhiji accepted the workers' right to go on strike, but they should exercise this right in a peaceful and non-violent manner. Workers should resort to strike for just cause and after the employers fail to respond to their moral appeals. गांधी जी के व्यूज़ इंडस्ट्रियल रिलेशंस पर बेस्ड हैं ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड नॉन पोजेशन जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर. गांधी जी के अकॉर्डिंगली अगर एम्प्लॉयर्स प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप फॉलो करते हैं तो उनमें और लेबर में कॉन्फ्लिक्ट का कोई स्कोप ही नहीं रह जाता. नाउ व्हाट इज दिस प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप? दिस इज अ सोशल एंड इकोनॉमिक फिलॉसफी जिसका एम है सोसाइटी में जस्टिस लाना.
और जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसे बैलेंस करना। अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी, जो वेल्दी पीपल हैं, जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा पोजेशन है, उन्हें अपनी ज़रूरत और आवश्यकताओं को पूरा करने जितनी संपत्ति को यूज़ करना चाहिए, और बाकी की जो संपत्ति है उसे एज ट्रस्टी की हैसियत से देखभाल कर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज़ करना चाहिए। सो द वेल्दी पीपल कुड बी परसुएडेड टू रिनाउंस देयर वेल्थ टू हेल्प पुअर। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप propounded बाय गांधी जी। और वर्कर्स को नॉन वायलेंट मीन्स यूज़ करने चाहिए, जैसे नॉन कॉपरेशन, फॉर एग्जाम्पल सत्याग्रह, टू गेट देयर ग्रीवियंसेस रीएड्रेस्ड। सो ही एक्सेप्टेड द वर्कर्स राइट टू गो ऑन स्ट्राइक, बट पीसफुल एंड नॉन वायलेंट मैनर में। अब गांधी जी ने कुछ रूल्स, कुछ गाइडलाइंस सजेस्ट किए हैं फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स। फर्स्टली, वर्कर्स को फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस में यूनियंस फॉर्म नहीं करनी चाहिए। फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो नॉन प्रॉफिट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वेयर द एसेट्स आर प्रोवाइडेड बाय डोनर्स। द ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज्ड बाय इट्स ओन ऑफिशियल्स, and whatever income is generated, it is used for socially useful services. So ऐसी organizations में workers को unions form नहीं करनी चाहिए। Secondly, workers को management के पास reasonable, valid demands लेकर जाना चाहिए, and also through collective action, not individually. Thirdly, जो essential services वाली industries हैं, for example food and agriculture, health care etc., वहाँ पर strikes नहीं होनी चाहिए। फोर्थली, स्ट्राइक आखिरी उपाय होना चाहिए जब बाकी सारे लॉफुल और लीगलाइज्ड और ऑथराइज्ड मीन्स जो हैं वो फेल हो जाएं। फिफ्थली, अगर ट्रेड यूनियंस को स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करनी है तो पहले वो वर्कर्स से सीक्रेटली वोट करवाएंगे। बैलेट मीन्स टू वोट सीक्रेटली। सो वो वोट करवाएंगे और पीसफुल एंड नॉन वायलेंट मेथड्स यूज़ करके वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सिक्सली, अगर डायरेक्ट सेटलमेंट नहीं हो पा रही है वर्कर्स और मैनेजमेंट में, तो वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन शुड बी यूज्ड टू रिजॉल्व दी कॉन्फ्लिक्ट्स। इंडिया का जो इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम है वो गांधीयन अप्रोच से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है, और बेसिक एलिमेंट ऑफ दिस अप्रोच इज पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। Next approach is system approach to industrial relations. This approach was developed by John Dunlop. It focuses on participation in the process, environmental forces, and output. It further studies the interrelations among different participants of industrial relation system. According to him, industrial system is a subsystem of the larger social systems. The system further includes subsystems like technology, market, and people. So ये जो system approach है, it was given by John Dunlop. इसमें 3 elements है: environmental forces, participation in process, and outputs. Environmental forces include market or economic constraints. Market और economic constraints जो हैं वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को काफ़ी हद तक अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। लेबर डिमांड इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट डिमांड बढ़ेगी तो लेबर डिमांड भी बढ़ेगी, तो इसका असर वर्कफोर्स पर भी होता है। इट अफेक्ट्स द नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स, सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई क्या रहेगा, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा। सो दीज वेरिएबल्स इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल रिलेशंस। देन देयर आर टेक्नोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। टेक्नोलॉजी में जब चेंजेस आते हैं तो वर्क प्रोसेसेस में, मेथड्स में भी चेंजेस आते हैं। एम्प्लॉयज़ की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती है वर्कर्स से। सो इट इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, वेज लेवल, कलेक्टिव बार्गेनिंग। Third point here is distribution of power. Distribution of power between workers organizations, the employers and the government. अगर ये तीनों पार्टीज मेच्योर नहीं है, पावर कॉन्शियस है और एक दूसरे की तरफ अग्रेसिव हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ही होंगे। एंड इफ दे आर मेच्योर, रिस्पॉन्सिबल एंड केयरफुल अबाउट द यूज ऑफ द पावर, देन द चांसेस ऑफ हैविंग कॉन्फ्लिक्ट्स डिक्रीजेस। सो दीज वर द एनवायरमेंटल फोर्सेस। सेकेंड एलिमेंट इज पार्टिसिपेंट्स इन द सिस्टम, which includes workers and their organizations, management and their representatives, government agencies like labor codes. Then the third element is output. Output is the result of interaction of the parties or actors of the system, which is manifested in the network of rules, country's labor policy and labor agreements, etc. that facilitate a fair deal to workers. So this was system approach to industrial relations as given by John Dunlop.
सो दीज वर द मोस्ट कॉमन अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। हमने इस वीडियो में ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट अप्रोचेस इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड कवर किए हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। और अगर आप इस टॉपिक पर नोट्स चाहते हैं या आप BBA और MBA के बाकी के सब्जेक्ट्स पर स्टडी मटेरियल चाहते हैं या आप UGC नेट पेपर 1, पेपर 2 कोड 55 पर स्टडी मटेरियल चाहते हैं, then you can visit our website also. I've shared the link of the website in the description box. Thank you for watching.